Hello students, today we discuss chapter number 5, subsidiary books. This is most important books in your accountancy. But before we discuss the concept of journal के बारे में अपने डिस्कस किए थे. Journal means day-to-day transactions are recording into this book. It is called as journal. So into this subsidiary books, it is a subdivision of journal also. Subsidiary books is a subdivision of journal उसे कहा जाता है. It is a books of original entry are write down into this book also. It is called journal. Another one, it is called subsidiary books. Nearby 8 types of subsidiary books we discuss into this topic. This is theoretical topics and practical are also asked into this topic number 5. Is going to 10 marks. 10 मार्क के लिए टॉपिक आपको है. यहाँ से पूछा जाता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. इसमें ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए आपको आता है. तो into this topic number 5, generally is a prime and principal book of account in which all transactions are entered and recording daily transaction, day-to-day transactions are recording into this book. It is called subsidiary books. So before being the posting of the ledger for the business having the large number of transactions, it is the different to write all transactions one journal. एक जनरल में रिकॉर्ड किया जाता था. Therefore, it is essential to classify the transaction in convenient manner and the record them into separate journal, special journal and separate journal, which we maintain our records into this subsidiary books. Generally, transactions are two types: cash and credit. We see details about the cash transactions and credit transactions within last lecture. Into this lecture, we see the subsidiary books, meaning of subsidiary books, advantage of subsidiary books, and some important specimen of subsidiary books and types of subsidiary books. The cash receipts and cash payment can be grouped in one category, whereas credit purchases and sales can be grouped another category. Credit purchases and sales are recorded into these subsidiary books. यानी कि only credit transactions are recording into these subsidiary books. Cash transactions are recording into this special book. It is cash book. Cash transaction आप cash book में रिकॉर्ड करते हैं और all जो transactions आपके cash transaction छोड़कर जो transactions आपके होते हैं बाकी के, that types of transactions are called credit transactions are recording into this subsidiary books. So types of subsidiary books, nearby 8 types of subsidiary books. सबसिडी बुक्स की जो टाइप्स आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, ये 4 बुक आपके हो गए. बिल्स रिसीवेबल बुक, बीआर उसे कहते हैं. बिल्स पेबल बुक, बीपी, बिल्स पेबल बुक, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. बिल्स पेबल बुक के बाद में आपका आता है कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर. नियर बाय 8 टाइप. 1 परचेज बुक, second sales book, third purchase return book, fourth sales return book, bills receivable book, bills payable book, cash book and general proper. जो अपने जनरल एंट्री देखेंगे तो जनरल प्रॉपर इज लास्ट सब्सिडियरी बुक्स इन अकाउंटेंसी. नियर बाय 8 टाइप जो आपकी सब्सिडियरी बुक्स के. परचेज बुक में परचेज की एंट्री होती है. सेल्स बुक में ऑल सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन दिस सेल्स बुक्स. परचेज रिटर्न बुक में जो आपने परचेज किए थे वो गुड्स क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं. दैट टाइप्स ऑफ एंट्री आर राइट डाउन टू दिस परचेज रिटर्न बुक, उसे कहते हैं परचेज रिटर्न बुक. परचेज किया हमारा आपका रिटर्न आता है, राइट डाउन टू दिस स्पेशल बुक. इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर. ये जो कैश बुक और जनरल प्रॉपर है इसका डिटेल्स में देखना है. टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या क्या कौन से होते हैं और बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं. बैंक बुक और कैश बुक ये दोनों डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर. कैश बुक के अंदर दैट इज द टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स. एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडी. सब्सिडी बुक्स के फायदे क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क इसमें होता है.
क्योंकि अलग अलग टाइप्स के बुक्स आप अपने मेंटेन करते हैं, परचेज बुक मेंटेन करते हैं, सेल्स बुक मेंटेन, एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज विच विल सी व्हेन यू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स इनटू दिस सब्सिडी बुक. इट हेल्प हाउ टू इंटरनल चेक मोर इफेक्टिवली. इंटरनल चेकिंग जो आपकी होती है, ऑडिट जो आप करते हैं ट्रांजेक्शंस का, इट इज मोर इफेक्टिवली व्हेन यू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स इनटू दिस सब्सिडी बुक्स. सो इसका एडवांटेज, पहला एडवांटेज देखते हैं, सब डिवीजन ऑफ बुक्स मेक रेफरेंस इजी. फ्यूचर रेफरेंस के लिए द सब्सिडी बुक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अकाउंटेंसी. फ्यूचर रेफरेंस आपको चाहिए तो वी शुड मेंटेन और रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली इनटू दिस परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक एंड सेल्स बुक व्हिच द सब डिवीजन ऑफ जनरल इज सब डिवीजन ऑफ जनरल इज कॉल्ड एज सब्सिडी बुक्स. सब्सिडी बुक्स का एक सब डिवीजन आपका है, उसे कहते हैं सब्सिडी. जनरल एंट्री का जो आपका सब डिवीजन है उसे कहते हैं सब डिवीजन ऑफ जनरल. वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन into this subsidy book. That is the second advantage of this subsidy books. Third advantage is it help to have internal check more effectively. Internal checking जो आप करते हैं, audit जो आपका होता है internal, which will be more effectively see result when you maintain your records into this subsidiary books. If subsidy books becomes handy, therefore it can be carried to any place at any time. कौन सी जगह पे आप उसको जाकर हैंड कैरी काम कर सकते हैं, इसलिए each subsidy books, and ये जो subsidy books आपके purchase book, sales book, purchase return books, bills receivable, bills payable, cash book and general proper, each subsidy books becomes handy. Therefore, it can be carried to any place at any time. Next, उसका जो advantage है, quick information and future information will be given into this when you maintaining your records into this subsidy books. Division of work we see into when you maintaining your records into this subsidy. That is the advantage of subsidy books. Time saving and economical, that is the advantage of our subsidy books. And specializations and increased efficiency when you maintain our records into this subsidy books, and it helps the saving lot of labor and time and money. That is the most important advantages we see into these subsidy books. And then specialization and increase in efficiency. When you maintain your records into these books, our efficiency will be increases and you save your time and money when you maintain your records into this subsidy. It is a subdivision of general. So types of subsidy books, we see the basic transactions जो होते हैं इसके अंदर, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस से रिलेटेड आपके सब्सिडी बुक्स आपके होते हैं, बिल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपके सब्सिडी बुक्स होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपके सब्सिडी बुक्स होते हैं, एंड अदर जनरल प्रॉपर से रिलेटेड आपके सब्सिडी बुक्स होते हैं. वी सी द डिटेल्स अबाउट द सब्सिडी बुक्स एंड द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस. बेस्ड ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर जो आपके सब्सिडी बुक्स होते हैं वी डिस्कस नाउ इनटू नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स. वी सी सम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी बुक्स एंड सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी डिस्कस इनटू दिस concept subsidy books. Subsidy books is a play important role in our accountancy. It is a general. So a general is called the subsidy books of accounts. The basic book of account is called general. आप कहते हैं उसे, इसके पर ये कंसेप्ट आपने देखे. General merely help the posting of entries into the ledger. Therefore, it is a subsidy books of accountancy. We post them into this. नेक्स्ट अकाउंट जो आपको होता है लेजर में पोस्टिंग करते हैं. द नंबर ऑफ काइंड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी केप्ट बाय द बिजनेस. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वी सी इनटू आवर बिजनेस. द बिजनेस हाउसेज जो आपके होते हैं, द बिजनेस हाउसेज डिपेंड अपॉन इट्स पर्टिकुलर नीड्स, बट देयर आर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच मस्ट इनवेरिएबल कर सकते हैं या इनवेरिएबली बी मेंटेन by every business houses. These are the general and ledger. But however, big business recording all transactions in one general will not only inconvenient but also it be cause of delay. So they have maintained their records into these subsidy books, because after industrializations and इसके पहले का before industrializations we see the volume of business are small. Business transactions कैसे थे आपके industrialization के before? Small थे. The small businessmen have maintained their records into this journal. Journal के अंदर record maintenance करते थे. But after industrializations, we see the large number of transactions into our business. So we maintain our records into this subdivision. Subdivision of journal. ये subdivision of general जो इसमें we should be maintaining our records. So
before the internalizations, the volume of business was small and the number of business transactions were few. Lump sum transactions आपके होते हैं, which we maintain the small businessmen have maintained their records into this general and only pass debit and credit amounts right down into this. He adopted double entry bookkeeping system also, but the records are maintained into this only general. Then after internalizations, we see the volume of business are increases, so they have maintaining their records into this subdivision where all records of a maintained. General was sufficient to record all transactions, but after industrializations, the volume of business increases by laps and bounds, and also number of transactions which are mostly restrictive in the nature also increases. So number of transactions are increased into this after industrializations. They are maintaining the records into this subsidiary. When too many transactions are recorded in general, it becomes very exhaustive. It is very exhaustive and blocky and does not serve the basic purpose of providing ready references. So they have maintained the records into this subsidiary. Also, it is not possible for more than one clerk and one work. More than one clerk and one work are not done this large number of transactions recording into this proper general. So they are one clerk and to work in general simultaneously. For example, you see the manufacturing जो एक्टिविटीज आपकी होती थी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आपकी है या लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस लाइक परचेसेस ऑफ गुड्स, cash or credit, that types of transactions are recorded into this subdivision of general subsidiary books. Sales of goods, cash and credit, return of goods to supplier, return of goods by the customer, payment to creditors, receipt from debtors, etc. The large number of transactions we are write down into this general. It is also not possible for the more than one clerk. So one clerk to work and general simultaneously. We see the manufacturer जो प्रोडक्ट आपके होते थे, मैन्युफैक्चरर एक्टिविटी जो आपकी होती थी, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक परचेसेस ऑफ गुड्स एंड कैश एंड क्रेडिट, सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट, रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर, that types of transactions we have seen into this subsidiary books. So subsidiary books, the subdivision of general is known as subsidiary books. It is a subdivision of general. The subsidiary books की जो definition आपकी है, subdivision of general, division of journal is called as subsidiary book. Is called as subsidiary book. That is the meaning. That is the definition of subsidiary book. Subdivision of journal. Journal का जो subdivision था, उसे subsidiary books क्या कहता है? Nearby 8 types of subsidiary books we discuss now into this concept subsidiary books. A small business may be able to records. ये छोटे businessman थे. He able to records all transactions in single journal. But as the business expands, the number of transactions becomes large. That the journal is required to subdivided into the special journal, which are called subsidiary books. The special journal is called subsidiary books. Special journal is called subsidiary book. Special journal is called subsidiary books. That is the second definition we see into this subsidiary books. Special journal is called as subsidiary books. We discussed thereafter types of subsidiary books. The businessman, the business expand, that journal is required to be subdivided into the special journal, which are called subsidiary books. Special journal जो आपका था, which discussed what is the special journal. Until this, a large number of transactions were added into this special journal. So the meaning of subdivision of journal on the basis of nature of transactions known as subsidiary books. These books are also called as the books of original entry and prime entries because the transactions are first recorded into subsidiary books, then posted into the ledger. These books are also called book of original entry. He said book of original entry, books of original entry, books of original entry.
Books of original entry is called as subsidiary books. Books of original entry is called as subsidiary books या entry because इसका reason जो है is called books of original entry is called as subsidiary book because इसका जो reason है उसके पीछे because the transactions are not first recorded because the transactions are not first recorded the business transactions are not first recorded in the subsidiary books. The transactions are first recorded in the subsidiary books and then posted into the ledger. Subsidiary books in the subsidiary books first recorded into subsidiary books. It is a subdivision of general. All business transactions are recorded first into this subsidiary books, then posted in the ledger. उसके बाद में रिसिप्ट लेजर अकाउंट्स में क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, खाते में ट्रांसफर करते हैं. एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री जो आपकी होती है, प्राइमरी एंट्री आर कॉल्ड सब्सिडी बुक्स बिकॉज द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इनटू द सब्सिडी बुक्स देन पोस्टेड इन द लेजर. दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स एंड सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी डिस्कस इनटू दिस लेजर. नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस सब्सिडी बुक्स का जो मीनिंग आपका है, मीनिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स वी डिस्कस नाउ. सब्सिडी बुक्स आर नथिंग बट सब डिविजन ऑफ जनरल. सब्सिडी बुक्स, मीनिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स जो आपका है, इट इज एट टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स डिस्कस इन दिस लेक्चर. सब्सिडी बुक्स आर नथिंग बट सब डिविजन ऑफ जनरल. Subsidiary books nothing but subsidiary books are nothing and subdivision of general. Subdivision of general. That is the meaning of subsidiary books. Subdivision books on the basis of nature of transactions. The subdivision of books are basis on the nature of transaction. Transactions के स्वरूप के ऊपर डिपेंड रहता है. Like a sales. Subdivided books जो आपके होते हैं, subdivided books on the basis of nature of transactions like sales जब माल बेचते हैं, sales purchases जब सेल्स करते हैं, जो परचेस करते हैं, and small cash expenses इत्यादि ETC expenses are called subsidy books. Are called subsidiary books. Subdivided books on the basis of nature of transactions like a sales, purchases, small cash expenses, etc. are called subsidiary books. Subsidiary books like a general of the original entry. Subsidiary books like the subdivision of general. Like general, subsidiary books are like सब जनरल या सब डिविजन आप बोल सकते हैं, या लाइक ए जनरल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को क्या कहते हैं, प्राइमरी एंट्री.
first entry we should write down into this book, that is called primary entry. First entry, it is the original entry, and transactions are, जो transactions आपके होते हैं, transactions are first recorded, transactions are first, पहली बार transactions में record करते हैं, first recorded in the respective subsidiary book, in the respective subsidiary books, that is the purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, that is the respective purchase books, and then posted to the ledger, and then posted to the ledger. That is a separate book are maintained, a separate book are maintained separate books are maintained for each transactions, for each transactions, separate books are maintained for each transactions, category of transactions, उस category of transactions, category of transactions की category जो उसके ऊपर डिपेंड है. The accounting category जो आपके transactions की category जो आपकी assets, liabilities, capital, revenue, expenses, that is the 5 categories we have seen in last lecture, last video. Categories of first topic जो आपने डिस्कस किया उसमें लिखी थी categories of transactions. Transactions की category 5 इसमें होती है. एक assets से related transaction होते हैं, liability से related आपके होते हैं, उसके बाद revenue से related होते हैं, and expenses से related आपके transaction आपके होते हैं. Assets, liability, capital ये 3, दूसरा revenue and gains, और 5वां आपका है expenses and losses से related जो transaction होते हैं, that is the category of our transactions दिखाते हैं. इससे related आपके transaction होते हैं. जरा 5 categories आपके होते हैं. 5 categories में नंबर 1 की category जो आपकी है वो है आपके assets से related transaction आपके होते हैं. दूसरे आपके liability के related से related आपके transaction होते हैं. तीसरे आपके capital से related आपके transaction होते हैं. अब चौथी category जो आपके revenue आपके जो gains आपके revenue और revenue से related आपकी transaction होते हैं. और 5वीं जो आपके expenses से related. That is the categories of our transactions. Assets number 1, number 2 liabilities, capital, revenue and expenses. So the separate books are maintained for each transactions. फिर वो transactions assets से related हो सकते हैं, revenue से, expenses से, liabilities से, capital से. That is the separate books are maintained. It is called subsidiary books. It is called a subdivision of general. It is called subsidiary books. That is the 8 types of subsidiary books. Now we discuss into this topic. इस टॉपिक में डिस्कस करना है. इसमें टाइप्स ऑफ जर्नल जो आपके होते हैं, टाइप्स ऑफ जर्नल जो आपकी एंट्री आप पास करते हैं, टाइप्स ऑफ जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ जर्नल में जो 2 टाइप्स आपके गिरते हैं इसमें, एक स्पेशल जर्नल आपका होता है और दूसरा होता है जनरल जर्नल. एंड ये पहला होगा आपका टाइप्स ऑफ जर्नल के अंदर. एंड एक दूसरा है आपका स्पेशल जर्नल एंड स्पेशल जर्नल. ये 2 जर्नल आपके होते हैं. ये सेकंड का जर्नल आपका है. फिर जनरल जो आपके होते हैं इसमें जर्नल जो आपका है, into this general journal we see the small scale operations, that is small business, small scale operation जो आपका होता है. small scale operations, छोटे जो ट्रांजेक्शन आपके होते हैं. few transactions are seen into this journal, not respective in a nature, transactions not respective in a nature, and engage in providing services. Engage in providing services.
That types of general is called as general. ये जनरल जो आपको होता है, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, फ्यू ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिस्पेक्टिव इन नेचर ऑफ एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट, लाइक फॉर एग्जांपल वी सी द टैक्स कंसल्टेंट जो आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स कंसल्टेंट उसके अंदर आते हैं, उसके बाद आते हैं लीगल कंसल्टेंट्स आपके इसमें आते हैं, और ट्यूटोरियल क्लासेस are the example of general. Special general, into this general, large scale operations and daily transactions large scale operations and daily transactions in a number of transactions are respective in number of transactions we see into this special general are respective in nature and engage in buying and selling goods. Engaged in buying and selling of goods. Buying and selling of goods. That is the providing services into general. That general is providing services for tax consultant, legal consultants, and tutorial classes. It is are the example of general. And special general, we see the large number of operations, daily transactions in the number of transactions are respective in the nature of engage and buying and selling of goods. That is the meaning of special general and general. So needs for subsidiary books we see into this concept of subsidiary books: division of work, specializations, or efficiency and time saving. It helps the saving of time and ready informations we see into these subsidiary books. That is the types of we see the general के जो types आपके हैं, general and special general. We discuss the important concept after this concept of subsidiary books. Types of subsidiary books on the basis of transactions. Types of subsidiary books on the basis of ट्रांजेक्शंस के बेसिस के ऊपर आपको सबसिडी बुक्स के टाइप्स आते हैं. ट्रांजेक्शंस के बेसिस के ऊपर वैसी डिटेल्स इनटू दिस चार्ट. फर्स्ट जो आपका ट्रांजेक्शन के बेसिस के ऊपर जो ट्रांजेक्शन आपके होते हैं, एक कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आपके होते हैं. कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस. उसके बाद में आपके कैश जो आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपके होते हैं, कैश ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. उसके बाद में थर्ड जो आपके बिल से रिलेटेड आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, बिल ट्रांजेक्शंस एंड अदर्स. बिल ट्रांजेक्शंस एंड अदर ट्रांजेक्शंस. अदर्स ट्रांजेक्शंस इसमें होते हैं. तो कैश ट्रांजेक्शंस जो होते हैं, इस कैश ट्रांजेक्शंस में वी सी द स्पेशल कैश बुक से रिलेटेड. इनटू द ट्रांजेक्शंस वी सी द टाइप्स ऑफ कैश बुक. कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है आपका कैश बुक, कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें होता है सिंगल कॉलम कैश बुक. कैश बुक के अंदर आपको देखना है. बैंक बुक आपको इसके अंदर देखना है. बैंक बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देखना है. बैंक बुक, टू कॉलम कैश बुक, and then after we see the PT cash book. And cash book
फर्स्ट जो आपका टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स में पहला जो सब्सिडी बुक्स है कैश बुक, उसके बाद क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो आपके टाइप्स उसमें आते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग इनटू दिस सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक्स में क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपको लिखे जाते हैं। जैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो आपका परचेज बुक आपको खरीदी पुस्तक लेते हैं। सेल्स बुक्स में आते हैं परचेस आइटम बुक एंड सेल्स आइटम बुक। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस आइटम बुक, सेल्स आइटम बुक। और बिल से रिलेटेड जो है बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल। बिल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आपके बिल्स रिसीवेबल बुक, एंड बिल्स पेबल बुक। बुक्स एंड अदर ट्रांजेक्शन जो आपके इसमें आते हैं, टाइप उसमें आते हैं। अदर ट्रांजेक्शन के अंदर से जनरल प्रॉपर, विच इज द टाइप्स ऑफ जनरल प्रॉपर। इस जनरल प्रॉपर में आपने देखे इसके पहले के इसमें जर्नल इसमें, और इसमें आता है स्पेशल जर्नल एंड स्पेशल जर्नल। वी सी it is a proper journal. It is a subdivision of journal is called as proper. And cash related आपका सेल्स सिंगल एंट्री कॉलम कैश बुक, बैंक बुक 2 कॉलम कैश बुक, पीटी कॉलम कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपका है परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस आइटम बुक, सेल्स आइटम बुक। इन शॉर्ट फॉर्म कुछ बोल सकते हैं परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस आइटम बुक पीआरबी बोल सकते हैं, और सेल्स आइटम बुक एसआरबी। ये बिल्स रिसीवेबल बुक इसे हम बिल्स ये बीआर बोलते हैं, और बिल्स पेबल बुक बीपी, बिल्स पेबल। अदर टाइप्स रिलेटेड जनरल प्रॉपर जो आपका है, जनरल प्रॉपर के अंदर जनरल एंड स्पेशल जनरल वी डिस्कस नाउ into this concept. That is the types of subsidiary books we see details about each and every books. It is a very important role in our accounting transactions. When you write your accounting, first this is the original entry, you have write down into this first subsidiary books, then after we will write down into ledger accounts, posting them into the ledgers. So first book we discuss now, the purchase book. Different types of जो books आपके हैं, that is the different types of books, different types of another word में उसे कहते हैं different types of subsidiary book, different types of subsidiary books.